आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वॉल फॉर्म डिजाइन जैसा कि IS 14687 में या ACI में दिया गया है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल 10 फीट 9 इंचेस टॉल 10 फीट 9 इंचेस टॉल एंड 16 इंच थिक। जो वॉल 10 फीट 9 इंच की टॉल है और उसकी जो थिकनेस है वॉल की दैट इज 16 इंचेस थिक will be formed using job built panels that are 12 feet high and 16 feet long. The wall will be poured in sections 80 feet long and concrete will be placed with a pump having capacity of 18 yard cube per hour. The expected temperature of concrete is 75 degrees Fahrenheit. The form panel will have the sheathing that is 3 by 4 inch thick, that is 19 mm. The sheathing will be supported horizontal double wales, जो lumber wales हैं 2/6 के हैं. The wale are held against spreading by wall ties. Pass through the form. Calculate the lateral pressure of the concrete on the form. So ये wall ties हैं, जो wales, ये हमारी wales हैं. This is wale जो कि फॉर्म टाइज से हेल्ड है, जो कि अपने पैनल को बाहर भागने से रोकते हैं. और जो हमारा वॉल पैनल्स है दैट इज 12 फीट हाइट का है और 16 फीट लॉन्ग है. क्योंकि 80 फीट की वॉल बनानी है तो 5 पैनल इसमें लगेंगे एंड वॉल टाइज भी लगेंगे, जिसे हम लोग टाई डॉट के नाम से जानते हैं. तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हाइट ऑफ पोर है दैट इज 10 फीट 9 इंच, थिकनेस है 16 इंच और जो पंप की कैपेसिटी है दैट इज 18 यार्ड क्यूब. पंप की कैपेसिटी जो है, पंप की कैपेसिटी प्लेसिंग का जो है 18 यार्ड क्यूब पर आवर. सो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच प्रेशर दिस फिक्स कंक्रीट विल एग्जर्ट ऑन द फॉर्म्स. जो उसका प्रेशर होगा उसी पे हमारा प्लाईवुड की थिकनेस, वेल्स जो स्टेट्स होंगे, स्पेसिंग ऑफ दिस, जो स्ट्रेंजर्स जो वर्टिकल लगे होंगे वो सब डिपेंड करेगी. सो रेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट. तो हमारा जो 80 फीट की वॉल है, 80 फीट की वॉल है, 16 इंच थिक है और जो उसकी हाइट है 10.75 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा. और वी नो द कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट पंप. तो हम लोगों को पर मीटर एक 1 पर आवर में कितना ऊंचाई भर देगा फॉर्म में वो पता लग जाएगा. तो रेट ऑफ प्लेसमेंट हो जाएगा. पहले तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो रिक्वायरमेंट है 80 फीट इंटू 10.75 इंटू 10.75 इंटू 10.75 इंटू 16 इंच थिक है डिवाइड बाई 12. तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 फीट. तो ये आ जाएगा 80 फीट इंटू 10.75 इंटू 1.33. So if we calculate it, this is 80 feet into 10.75 into 1.33. So it has come 1143.8 CFT. नाउ हमारी जो पंप की कैपेसिटी है 18 यार्ड क्यूब पर आवर है. सो पंप की कैपेसिटी है, पंप कैपेसिटी टू प्लेस द कंक्रीट 18 यार्ड क्यूब per hour. So we can convert in CFT. 18, since in the construction field
the mystery masons and all the persons working at site use this foot, yard, all this rating, and German and Americans, they are also using it. In the UK also they are using FPS methods. That is why it is very important to understand the FPS method of getting rate. If we are having some form from the international agency, so they will be rating their farm work in the FPS. So we should be convergent with the FPS method also. So 18 into 3 to the power 3 CFT per hour. So 18 into 27, that is 486 CFT per hour. Since now we know the 486 CFT per hour concrete can place, and total requirement is 1143.8. So how many hours it will take to fill the farm work? So it will take about, time required will be filling that farm of 80 feet long will be 1143.8 divided by 486. So divided by 486, so 2.35 hours. So height per hour will be 10.75 divided by 2.35. So it will be 10.75 divided by 2.35, 4.7 feet, 4.57 feet per hour. So the placing of concrete is less than 7 feet per hour, means जो height fill करेगी in the formwork वो 7 feet से नीचे है. So we can use this 4.57 feet per hour for all calculation purpose. Now we will be taking with the IS 14687 जो कि मीटर में दिया गया है. So we should convert 4.57 in the meter. So to convert this, we simply multiply by 0.3. So it will be 1.37 meter per hour, which is less than 2.1 meter. So we can use this for the getting form pressure directly with the graph given in the IS 14687. So this is the graph given in IS 14687 99, which is having rate of placement in meter per hour. We have seen our rate of placement is 1.37. So our rate of placement is 1.37. 1.37 meter per hour, and for the different temperature, to get the pressure on the formwork, maximum pressure on the formwork due to fresh concrete for different temperature, this graph is given. So for us, the concrete temperature is 75 degree Fahrenheit. We can convert into the degree Celsius. So to convert degree Celsius, we know that F minus 32 into 5 by 9. So F is 75 minus 32 into 5 by 9. So we can calculate this. (75 minus 32 is equal to 43 into 5 divided by 9. So we get 23.88 degree Celsius, say 25 degree Celsius. So for 25 degree Celsius, this is the graph. 25 degree, this is this one. So for this, for the 25 degree, we can
take the so the pressure on the form due to fresh concrete pressure will be pressure due to concrete due to fresh concrete due to fresh concrete on the form will be, say this is about 33 kilonewton per meter square. So 33 kilonewton per meter square. If we convert in the pound, we multiply it. We can convert it into the pound per square feet. So we can multiply it by 20.884. So in pound per square feet, it will be 33 into 20.884. So 33 into 20.884. So 689.172 pound पर स्क्वायर फीट. जो हमारी 18 mm की प्लाईवुड होती है दैट इज अबाउट 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेती है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लेते हैं 50%. तो अबाउट 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड ले सकती है. तो हमारा जो वर्टिकल मेंबर है वी कैन डिजाइन अकॉर्डिंगली, and for deflection and other criteria also we must take. So we will be taking up in formwork design में separately. And now with the help of ACI formula जो कि कमेटी 347 ने दिया था, उसमें क्राइटेरिया है जब 7 फीट तक की हम फिलिंग 1 घंटे में करते हैं तो वी मस्ट यूज दिस फार्मूला फॉर द गेटिंग प्रेशर. P इक्वल टू chemical coefficient into unit weight coefficient. They are, if we are not using retarder, they will be 150 plus 9000 R by T. So this will be 1 into 150 plus 9000. Rate, we have rate of pore, we calculated 4.57 feet per hour. So we have to put this value 4.57 feet per hour divided by 75 degrees Fahrenheit. So we can solve this. 4.57 divided by 75 equal to this into 9000 equal to plus 150. So this has come 698.39